Sorry. Which subject was the easiest out of three? Huh? Chemistry. And the hardest? That's like opposite review. Okay. Physics most difficult. Chemistry, physics and maths. Because you got less time to do physics. Okay. And you? Huh? Sorry? I did it in order. Did you have also have time issue? How many questions did you attempt? Subject wise? Physics, one question you didn't do? Okay. AC चला दीजिए 20 पे लग दो 20 so that by that logic chemistry should be the most difficult 20 भैया 25 है तो हाँ हाँ बस perfect हाँ maths 3 then so you are some the most difficult should be maths how is this assessment correct okay you got your book okay huh come on 12th what is today is about 9th 8th 9th then
What are you going to do till then? VP sheet done, module done? Get a photocopy or something. I think just for now, take level 1. By the time I think you do done with level 1. But how many level it does? Level 1, level 2, level 3. 3 levels, 4. 3 levels. You have the book? You have the book right now? Wait, I'll have the book. I'll check. But I think just get the first, I think it will have 170 something like that question. Take you 2 days or 3 days, something like that. By that time it will be done. But now you have to do the book. VP sheet and module are completely done, right? Finish it. Like, to be thorough. I think again, by the time you understand, this is not a lot of this is going to be really difficult in terms of thinking. It's just about covering all the theory points that we know, we are familiar with or not. So in this chemistry, it matters a lot that you're going from end to end, because that means you're covering the entire base of theory. That is the only thing that matters. Everything else you'll figure out. So finish module VP sheet completely. Any doubts? Let me know. You want to discuss the paper? You have some doubts in paper? Huh? 46. Average lifetime taken for n equal to 3. Oh. Oh, this question you cannot do. नहीं, the average lifetime का formula होता है. ये radioactive का average lifetime for n equal to 3 excited state of hydrogen atom is 4 into 10 की power minus 8 second. Then for n equal to 2 state is 1.28 into 10 की power minus 7 second. Rate of average number of revolution made in the n equal to 3 state to average number of revolution made in n equal to 2 state before any transition can take place from these state is. अच्छा. The average lifetime for n equal to 3 excited state of hydrogen atom is 4.8 into 10 to the power minus 8 second, and that of n equal to 2 is this value. Then ratio of average number of revolution made. अच्छा, ये तो CC can do actually, no? Rate of ratio of average number of revolution made in n equal to 3. So time period is given to you. You know radius. This is, yeah, that's correct only. Time you have. No, this though is clear actually. This can be done. Sorry. गया समझ में? Anything else? Where it is? Huh? I guess. How is the paper? I have not seen that. I don't know the paper actually. Huh? What? Photon? A photon? How? Photon are massless. Momentum and mass don't really correlate. Okay. But that's what I'm saying. मतलब that's the thing that I said ना कि photon की देखो this now you're going in a murky territory. Now we are presuming things with half-baked knowledge. So that mass and velocity relationship, so you have to know all the things to make any statement about that. So we don't know any of that. So we can't make statement about that. We will make statement about mass at rest only. 31st question. What is R Rydberg constant? You didn't do this?
What did you think it was? When you mark the answer, what did you assume it was? Rydberg constant only. It's a Rydberg constant. Anything else? This paper though seems not very good. No, it's okay. Hmm? These questions, later questions are still some nice question. Actually, main thing is actually for this paper to cover everything, I think, which it does actually. 50th question you got? 47? See, these are good questions. 47, 50, these are the type of question you will get in actual paper. Oh, this sample of hydrogen atom contain all the atom in particular excited state. They emit a radiation of 10 different wavelength. After this 10 radiation, 7 have wavelengths shorter than absorbed to radius. Got this? Okay. Which you said how many questions did you leave? Which ones? What is you did the momentum of photon? How much mass did you take? This is the MCQ. The momentum of photon having 6 megavolt electron volt energy. ऐसा ये p square. Wait, what is the mass? How do you do this? 6 mega electron volt. Then wait. You have the kinetic energy. What do you do with the kinetic energy? Acha, you divide by c. Right. Then you get the mass. What did you do? How did you get the mass? Or whatever, momentum. How did you calculate it? Huh? So then how did you mark 3.2 to 10 minus 21? Hey, your system seems very murky, bhai. It didn't say kinetic energy. I just assumed it would be potential energy. Okay, so if potential energy is there, then still how do we find that out? Equal to lambda by h. You can also do it like this, no? Like you can get the lambda, अच्छा, mass तो फिर भी चाहिए होगा. You have to do that actually. I was just thinking if you can get lambda and you just then basically p will be what h by lambda. But how do you get lambda? Like you're still gonna need m even further from the.
Right, na, correct. So you can get this is the energy, then you can put it equal to h mu. From that you can get lambda. From lambda is equal to what? P will be lambda by h, no? Sorry, h by lambda. So you don't get an answer for them from that? What regular calculation did you do? Matlab explain na. You're getting 2? Because my thought is ki bhai, if you need m, then you can't do this question. So you have to figure out an alternate way in which you don't deal with them. No, but lambda is equal to h upon 2 root 2m. So if you from kinetic energy and the relation between momentum and kinetic energy, p square is equal to kinetic energy is equal to p square by 2m, right? Yeah. So even in interchanging momentum to kinetic energy, you will always need mass. So basically you do E is equal to h mu, then from there get lambda, and that lambda you put in this, you get momentum. Huh? But the kinetic energy is same. No, magnitude is same. It's just kinetic energy is same. Total energy. We did another question also, no, that lambda question, lambda 1, lambda 2. Kinetic energy, total energy, same values. Yeah. What is the wait? This one is working, right? The other one we have to try. What is the other method? Batao khud. What are you saying? Kinetic energy is equal to, it is equal to, correct. Now what you are saying is ki, hey, that's not right. Kinetic energy into C. Kinetic energy into 2 by C. Half mb, half से half गया, mb square mb, correct. हाँ ठीक है. ये रिलेशन तुमने बना दिया यार. Kinetic energy is 6 10 की power 6 1.6 into 10 की power minus 19 into 2 by 3 into 10 की power 8. This is what, 4 into 1.6 into 10 की power minus 21. So this is what? This is the momentum. This still doesn't work. Why does it not work? Because the assumption of C is wrong. Must move at C. I agree. And what we are saying is, this 6 milli electron volt is equal to hc by lambda. So C तो use कर ही रहे ना भाई. So lambda is equal to basically hc by minus 13, and lambda is equal to h by p. So p is equal to h by lambda. So we are saying p is equal to h upon hc
What is the gap? I don't understand. Okay. Something to think about, I guess. Okay. Anything else from this paper? Huh? Take a look. Yes. Huh? Yeah, it is. Very interesting also what is happening. Well, there is basically some variable we are not accounting for. Huh? This one. This one is H into what is that? This is H into energy by HC. So yeah, H and H cancel. Yeah. Yeah. Actually, that's actually not a invalid point. Ki maybe kind what for what do we say total energy is the kinetic? That is for an electron. Maybe for photon we cannot make that assumption of kinetic energy being equal to total energy. But what? Yeah, charge. So literally mass body you cannot have potential energy. Whatever energy you can have, there's going to be kinetic energy because otherwise it don't exist, right? Photon is in motion. Huh? No, it is that it is. We did question based on that. Huh? Matter waves. Huh? Interesting. Anything else? No? Okay. Chalo bhai, let's start the next chapter. Enough of this. So all this is all basic stuff. You'll have to bear through it. We'll do fast, but you need to do this because again, very difficult question and question from this same marks. You know, although you'll know most of the stuff, I'll just glaze through it. So matter is anything that has mass and occupies space. Okay, by classification of matter, this should be very clear. This is the I think this is the only thing that ever is confusing could be by how come you have H2O and you have compound is pure? Because the fundamental particle is same, and that is where everything is. Okay. इसमें one thing I'll tell you. Okay, this is one interesting thing I'll tell you. You have if I say phase, what do you understand by phase? By phase, generally we understand physical state, but the physical state and phase are not the same. Okay, so these are your solid state, liquid state, gaseous state. These are states of compound. What decides, by the way, that a given compound will have a given state? So, oxygen at room temperature is going to be air, but water is going to be liquid. Who decides that? What makes that? There are two factors ever that decide. It's interplay between two factors that decides the state of any given compound. And the two factors are internal, not internal energy, you can call it thermal energy is the better word to use for it. Thermal energy and intermolecular forces. So they are going in opposite direction. Hai? So where if you go on one end where thermal energy is maximum and intermolecular forces are weakest, that will become your gaseous state. Anything on the opposite spectrum where thermal energy is minimum and intermolecular forces are strongest, that will become solid, and everything between is liquid. So just by one factor you cannot do. There is something called critical temperature. You have ever heard this word, critical temperature?
No, this is critical temperature is the highest temperature. What are you talking about is triple point, I guess, different city. Yes. So if somebody people think like, okay, if you just it's just a matter of forces. You just give enough force, enough attraction, and it will become changed. No, that's not going to happen. There's a concept of critical temperature. Critical temperature is the highest temperature at which you can liquefy a gas. If you go above that temperature, no matter how much infinite pressure you can put, it will still remain gas. That just shows the how this thermal energy is of vital energy, because temperature increasing is what? Just the 3/2 kT kinetic energy of the molecule of the gas, right? So that's the one aspect of it. It's not just intermolecular forces, it's intermolecular forces and interplay of intermolecular forces and thermal energy that decides state. Now state and phase are different. State is this, whatever comes out of interplay of thermal energy and intermolecular forces. Phase is what? Phase is the one arrangement of atoms, and any form you have same arrangement of atoms, and if the other element has different arrangement of atoms, there will be two different phases while they could be same state. For example, all allotropic forms. So carbon diamond arrangement is what? Carbon bonded to 4 sigma bonds to other carbon. So network solid, covalent network solid we call it. But graphite, which is another covalent network solid, but the system is completely different. One carbon connected to 3 carbon in a layer, 3 electron, then you have another layer, then you have another layer, then you have another layer. So these two are same state of the element, but they are different phases. Always remember. That's the only new thing I can tell. Homogeneous, non-homogeneous. Okay. Pure substance. One line क्या will say? Same fundamental particle. Mixtures. Okay भाई, fast. Question बता दो. So physical property, who is responsible for physical properties by? The mass of the atom, है ना? A value. If A values are same, we talked about this already. And this is what we will study. And all the chemical property that we study, that chemistry that we understand, and we are going to talk about throughout 11, 12, that depends upon one single thing, which is what? Electrons. Everything dependent upon electrons. So all these properties dependent on the A value. This is all property dependent on the Z value. How many electrons do you have? But how many you want to give? How many you want to take? How many you want to share? Everything is about that. Everything is about electrons. Okay, bhai. This you have to do. Okay, this you have to do. I'll give you this in homework. Write all the definitions, bhai, because one time you will see one question. You'll see has a booklet. You can open the PYQ. There's a direct question that came 1 year, which is based on direct definition of candela, luminous intensity, I think. Studying करके. By the way, module में did you guys do PW challenges also? Yeah, look at this first question only. This one. Check the PYQ, first PYQ. So, in mole concept, second chapter, first PYQ check. So, you can only solve that question if you know the definition, how much to take, how much not to take. So, all the definitions by how are they defined, whatever is given in NCERT, you got to know. PYQ first question in mole concept. This question. How much do you take it? Okay. So these kind of questions are also asked sometimes
For that, you need to know the definitions, then you can start to solve how much study and whatever. Okay. Baki, these are the only 7 fundamental things. I think you already know this. Is this in physics also? No? These are the 7 unit and dimension, right? So these are your 7 fundamental units. So write in your notes, this is kind of your homework, write definitions of every one of them, है ना? Only then you will be able to attempt a question like that. This is important. ये अभी इसको घर पे लिखना. No need to waste it. Okay, this I guess you guys already know. Scale. Huh? Main part is still here. This is the main part. Other these exa, zeta, iota, auto, zepto, iota, you don't really need. Mostly you're going to need from somewhere between 10 to the power 15 to 10 to the power minus 50. That's pretty much where you're going to be. No more than that, no less than that. Okay. No need to write. You understand it very well. Okay. Symbols also are very important, like especially these micro, milli, deca, deci, है ना? Not to get confused. Okay. What is the answer? Micro is, deca is, mega is, giga is, femto is, so 1 decimeter is how much? 1 liter. So this is what, 20 liter, which is what, 20,000. Actually, this question you cannot do. This question will come to the end. This is slide number. Wait, this will come to the end. You can't do this. But you guys can do, no? You know significant figures and everything, you know, right? Huh? What? Okay, but just to clarify, significant figures, how do you do? Multiplication, what do you do? And addition, subtraction, what do you do? Huh? After the decimal, not the same. After the decimal, you have to say the same thing. So different, है ना? Clear? Okay. Now tell me the answer. Huh? अच्छा. टेम्परेचर क्या होता है भाई? रिलेशन क्या होता है? एक बार कर देते हैं. डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 degree centigrade plus 32, and second is Kelvin, which is how much? 273.15 plus degree centigrade. Now you can figure out the third relation. Clear? What is the answer for this question? Okay, pressure and its units. You guys know this? Okay. So first is 1 atm, then you have 1 bar, then you have 760 mmHg, which is equal to 1 atm.
1 mm Hg equal to 1 torr. Another you can use is 76 centimeter Hg. This is also equal to 1 atm. 1 bar is equal to 10 की power 5 Pascal. 1 atm 1.013 into 10 की power 5 Pascal. And from this we can find the relation between atmosphere and bar. है ना? So we can say 1 atm is equal to 1.013 bar, or we can say 1 bar is equal to 0.987 atm. Okay, clear? Is there any unit which is new that you have not seen before? All of them you see. This must come in physics also, no? ठीक है. हाँ चलो ये बता दो. अगर ये यहाँ है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा. नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? कितना इंक्रीज होगा? करेक्ट. हाँ, बैरोमीटर. This will be uncertainty in measurement. So there are two concepts: accuracy and precision. What is accuracy? What is precision? How much? Correct. So if you're doing experiment basically, and all your values, you do an experiment, one value, the true value is 2. So proximity to true value will be accuracy, and the closeness, proximity in the values that you are getting from the experimentation, that will be precision, है ना? And if both are close to 2, then it's precise and accurate, and if not, then you can figure out, है ना? This is a very good very well, है ना? This is, what does this has? This is neither no nor accuracy nor precision. This is what? This definitely precision, but definitely not accurate. This is what? This is more accurate but not really precise. This is accurate and precise. Okay. Bhai. Empirical data. Scientific notation: 1 decimal, 2 decimal point. Our standard is up to 2 decimal point, and remaining 10. Significant figures, no need to talk about this. 5, beginning all numbers between 0 counted, previous 0 not counted, decimal after 0 all counted. And 2 banana is how many significant figures? Infinite. Clear? Because 2 banana is 2 banana. There is no 2.0001 banana. No, 1 anshu is 1 anshu, not 1.0001 anshu. Okay. That's a infinitely precise. है ना? Okay. So all these we don't need to go to. अच्छा, question तो करोगे ना? Question तो करोगे. हाँ? See, bhai, this will not be counted. This will not be counted. You want me to go through the rules once?
Which one? A, both B and C. Results of student A are both precise and accurate. Definitely. Student of B are neither precise nor accurate. No, no. C is not the answer. क्या बात कर रहे हो? इसका एवरेज निकालो कितना आएगा? 3 आएगा ना? So this guy is accurate but not precise. Don't make this mistake. Clear? This we've already talked about. In addition, you have to check the highest number of decimal. Or the decimal के after what is the least number? Sorry, not highest, least number. And in multiplication, you have to check number of significant figures. If it has 2, this has 3, 2 will, the product will have to be. Rounding off, 5 below, does not count, 5 above count, 5 below, even you count increase by 1, or sorry, even you keep the same, odd you increase by 1. What is the answer, bhai? 4.8 into, then this is 5.000 into 10 to the power 2. Okay. How many? How many? How many? How many? How many? How many? Clear? Any doubt? This you do. First one will be hmm? What is the answer? Huh? Yes. Clear? Wait. What this is? Which is the answer? Are you sure? Is it not 25 into 1.76? So this is not 2? Huh? Clear? You had this question. Which chapter do you have this in? Units mein you have this. So you have just done this right now. Okay. What? Three? How come one? Oh, don't make such mistakes, bhai. This will become -1. Clear?
One. A. Okay. What will you get from here? 2. What will you get from here? 2. Answer will be what? 2. Correct? Or if you want to solve, this will be what? 100. Actually, you know what? You solve. Clear? Acha, how do this is for this because both are 2. Acha, 2 कहाँ है? तो 1 हो गया. What is the answer? Hmm? What is average atomic mass? We will talk about this. Formula mass. Okay, what is this? Before this formula mass concept. So when we talk about there is molecular mass, atomic mass. Atomic mass is mass of one atom. Molecular mass is mass of one molecule. But what about NaCl? How do we define it? It's a big structure. It's a 3D lattice. There is no ion. There is no there is no atom. There is no molecule. So you cannot define for one molecule and be like, okay, multiply it. So in that, what we do is we find the simplest unit. That simplest unit is called formula unit, and that mass of that formula unit is called formula mass. Clear? That is what this is. So this is actually like a molecular mass, but wouldn't be. We will take it under the umbrella of molecular mass only. But we should understand that there are no molecules in the ionic compound. There is the smallest unit is called formula unit, and the mass of that formula unit is formula mass. Clear? Mole is like a dozen. Dozen is 12 cricket bats. So if I say 6.022 into 10 by 23 cricket bats, that's 1 mole of cricket bats. Huh? Yes. Huh? It has to guesses, right? Because that's a very crazy number. Actually, I totally forgot actually how to figure it out. I knew this part. Forgot. Did any of you get this book that I told you? Disappearing Spoon, the fun book. Huh? Huh? Why? You don't read books? Okay. Okay, wait. So there are these 5 laws. I think you're already familiar with them. First is called law of conservation of mass, given by Antoine Lavoisier, 1789. He said balanced chemical equation, mass of reactant equal to mass of product. Hai write this because I think you remember everything else, but sometimes they ask this also. This you might not know or remember. So just write
Sometimes ask which verb were given by which.
I guess that we're getting a wrong answer from that, although it's the same, just literally, I'm just thinking because we're applying lambda is equal to h upon under root 2m kinetic energy, but kinetic energy, this formula is for matter waves. When we're talking about a photon, it's out of the two, E is equal to h mu is easy photon. That I'm not bothered by because okay, it's a theoretical thing, it's fine. Like that doesn't bother me so much because just because you're solving question doesn't mean that thing has to happen in real life or whatever. Uh, नहीं यार मतलब ऐसे weird weird question दे देते हैं. I remember one time JME question था मतलब probability of error of position of electron in a nucleus. Yeah. So these type of theoretically nonsensical things they give, that doesn't bother me. I mean, these are mathematical questions. That's why I'm saying, मतलब, the moment that happens, you basically switch off from chemistry part and you think mathematically about those things. मतलब, you don't think about the chemistry part of that. Then, so last two laws, the first four laws that we've written, that for everything, last two laws we will write there only for gases, only for gases. What is the first chapter in maths? With physics also is basic math. Same chapter. Okay. And physics is basic math then. What is the next chapter now you're doing? The quadratics. Physics में unit dimension, basic math, unit dimension done. Unit dimension done. Done. Done, sir. So this guy basically did this. He never gave, by the way, the Avogadro number. It was given by somebody else. I think Millikan or somebody. I don't know who gave it, but
This guy definitely didn't give. Okay. Any doubt in these 5 points? Sorry, not 5, 6. Okay, wait. What is density? Density is equal to mass upon volume. What is relative density? Relative density is equal to density divided by density of what? H2. Yes. Yes. हाँ ठीक है basically just by 2. So relative density, how do you find density? PV equal to nRT for gases. This is obviously all for gases. So P is equal to this N is what? W by M. A. So this density of given compound. What will be density of given compound? P into M of gas upon R upon T. This will be what? P mass of gas, which is what? 2 R into T. So for same pressure and temperature, if you change pressure and temperature, this can change. So somebody can mess around with you, है ना? Somebody can give you by different pressure and temperature and ask relative density. So in that case, you actually have to use this formula and find the different pressure and temperature, है ना? Because in this condition, if you take same pressure and condition, what will happen? Everything is get cancelled. So relative density becomes what? M gas by 2. So this is only with for same pressure and temperature. So, है ना? Two things to keep in mind. One is this is only applicable to gases, and second thing is this holds true only when pressure and temperature conditions are same. And if pressure and condition are different, then what do? You go back to the original formula. You go back to the original formula and find the density ratio. Clear? What is specific gravity? What is specific gravity, bhai?
density of compound divided by what? Huh? So basically, it's your density without unit, because this value is 1 gram per ml. Density of compound is x gram per ml. So what is the specific gravity x? So it's your density value without unit. Write this first. Oh my god. Oh, whatever I did in relative density was vapor density. My bad. That relative density will be, oh, sorry. Relative density will be density of compound divided by density of compound to which we are taking relative. Sorry. इसको लिख देते base compound. Now that could be anything. For example, they can ask you what is the relative density of water with respect to methane. Huh? So what do you do? Density of water, density of methane. Correct. So somebody can ask you, for example, what is the relative density of SO3 with respect to methane? Atomicity is what? CH4, what is the atomicity? 5. P4, what is the atomicity? 4. S8, what is the atomicity? 8. बताओ भाई, true false? True or false? False. Law of conservation mass cannot be applied to nuclear reaction. Nuclear reaction, mass changes. है ना, E is equal to mc square. Mass can become energy, energy can become mass. अरे भाई, what is this? हाँ. What is the answer? 3.3. Next. What is the answer? 32. वन बाय वन और क्या क्या करेंगे? Explain. I don't know anything. Explain. How do we start? How do you do the proof? बताओ. Hmm. 1.8 gram metal plus 1.2 gram O2 give 3 gram oxide. Okay. 1.5 gram metal plus 1 gram oxygen gave 2.5 gram oxide. Okay. 1 point
This is what you're saying. E by 2. What? What is law of constant proportion? Hmm? So all you have to do is take this ratio. No, this is enough. Acha, I thought you were going there also. So this is what 1.5. This is what 1.5. Proven. What do you say? By same compound, different compound. How? So 4 by 1.1.5 is how much? This is how much? Whatever you will do. Too much work for me to do. Which law is obeyed here? Hmm? What is this law? Gases combine in same ratio. It is true at any condition of temperature, pressure. What is the statement? The statement says very fixed. Only for the same condition of temperature and pressure you can apply this. Right? Not any condition of temperature. Yeah. Same for both gases. No, that's a condition. They're saying any condition of temperature and pressure. How do you assume from this that they're saying the same condition? The statement should be such that it cannot be contradicted. Only then it is true. अच्छा देखो ये सब तो आगे ज्यादा आ गया इसमें पता नहीं मोल की कैलकुलेशन आया नहीं यार इसमें मोल की कैलकुलेशन आना चाहिए था आगे दिया ही नहीं है इसमें अरे क्या परसेंटेज कंपोजर पे कहाँ से पहुंच गए भाई द वेयर इज द ग्राम एटॉमिक मास रिलेटिव मास कोई नहीं चलो मैं कर देता हूँ
बाकी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, बट व्हाट आई विल डू इज व्हाट इज द मोल वाला कैलकुलेशन ऑफ मोल, दिस आई विल डू। थोड़ा उल्टा हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। So there are three ways to calculate mole, simple. What is one? एक तो gases का PV equal to nRT है ना, this is so there, in which you can put values. So number of moles is equal to basically what? Volume of gas divided by 22.4 liters. If the volume of gas is in liters, and if it is in ml, volume of gas ml, this will be divided by 2 to 400 ml. Now, second, n is equal to given mass by molar mass. Molar mass is mass of 1 mole, and then you have third, which is number of moles is equal to number of particles divided by hmm?
आंसर की मिला? Didn't receive it. One second. क्या नाम है पेपर? I've sent it on the group. ठीक है? फोन नहीं है क्या तुम दोनों के पास? You also don't have phone. तुम्हारे पास तो नहीं है, हाँ? अच्छा, ठीक है। बोलो, कुछ डाउट्स है पेपर में तो? मेंस वाला था, एडवांस वाला था कल? मेंस पेपर। Which one? क्वेश्चन नंबर 5। लिक्विड ड्रॉप प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टली। अच्छा, सरफेस टेंशन का आइडिया है यहाँ पे तुमको? व्हाट इज सरफेस टेंशन? दिस वाज अ न्यू टर्म फॉर यू, नो? सरफेस टेंशन तुमने देखा था? कुछ क्वेश्चंस में नहीं आया था क्या तुम्हारे मॉड्यूल में? दे हैव गिवन टू फाइंड आउट। Okay, I mean, you have to check with the dimensional analysis whether the dimension of this quantity given in the question matches with any of these. Mu, okay, 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 okay. Rho होना चाहिए यहाँ पे, I think. What did you take it as? Rho लिया? Because they have mentioned here कि अच्छा, अरे यार, क्वेश्चन पेपर जो इन्होंने भेजा था उसमें कुछ, हाँ, small frequency v about its equilibrium shape, sigma is surface tension. I think इसका कॉपी तो भेजा था पेपर का। One second. यार, क्वेश्चन नंबर म्यू ही लिखा हुआ है इसमें भी, सॉफ्ट कॉपी में भी। म्यू इज नॉट देयर एनीवेयर, नो? अरे यार, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 5 तब रहने दो, इट विल गो एज अ बोनस। show me. Does not match, does match with the dimensions ना? तुमने क्या किया इसमें? कोई भी एक मार्क कर दिया? अरे यार, तुमने किसी से पूछा? Like, why didn't you ask with somebody? Okay, you give the exam here only in this. Okay, okay, okay. एक बार बोल देते हैं ना उसको, एग्जाम कोऑर्डिनेटर रहता है ना, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू टेल द एग्जाम कोऑर्डिनेटर डायरेक्टली। एटलीस्ट आई विल गो थ्रू द पेपर एंड आई विल गेट इट रेक्टिफाइड, अगर कुछ ऐसा मिस्टेक्स तुमको फील होता है तो। शो मी। देर आस्किंग यू, अच्छा मतलब ये डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मेथड फोकल लेंथ इज दिस, एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ इज व्हाट दे आर आस्किंग ना। x is 30 centimeter, 30.0 they have given, तो मतलब 0.1 सेंटीमीटर हैज टू बी टेकन एज द लीस्ट काउंट एरर, वही लेना पड़ेगा। क्या आंसर है इसका? नहीं नहीं, ये तो मैंने बताया था क्लास में एक क्वेश्चन में, याद है तुमको? इफ एरर इज नॉट गिवन यू हैव टू टेक लीस्ट काउंट एज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें नहीं दिया जाएगा आंसर। अदरवाइज डी में भी कुछ एरर नहीं है, एक्स में भी कुछ एरर नहीं, मतलब एफ में भी कुछ नहीं एरर हुआ। नहीं, ऐसे तो रॉन्ग हो जाएगा फिर वो। अदरवाइज व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ आस्किंग दैट क्वेश्चन? कोई एरर ही अगर नहीं होता, नहीं तो जीरो दिया होता आंसर में, तो वो एम्बिग्यूअस हो जाता फिर थोड़ा सा। इफ द आंसर इज गिवन एज समथिंग विच इज नॉट
equal to 0, so you should have taken least count error as the error, है ना? Because the instrument with the help of which the measurement have been taken, उसमें 0.1 सेंटीमीटर का रेजोल्यूशन है. तो अभी तो आई गेस कर लोगे उस क्वेश्चन को, है ना? लॉग ले लोगे डिफरेंशिएट करके. Any other question in which you have doubt? Okay. अंशु, कौन सा क्वेश्चन तुमने बताया? क्वेश्चन नंबर 5, नो? क्वेश्चन 5 and 9 will also go as a bonus. मतलब लेकिन you should have figured out that they are asking you to does not match with the dimension of the mass. Okay. Hmm. Uh-huh. No, minor test is only for you guys. लेकिन VPAR वाला जब एग्जाम स्टार्ट होगा ना तुम्हारा, probably in the month of May it will be started. Not everywhere. It has only started here. Usually it starts in the month of May. जैसे लास्ट ईयर भी मई में स्टार्ट हुआ था, तो May onwards you will be having test. तुमने VPAR दिया भी था ना लास्ट ईयर, मई में ही स्टार्ट हुआ था. तो अराउंड मे यू विल हैव द रेगुलर टेस्ट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 days. तो VPAR जो होगा उसमें सारे जितने भी AR बैच के बच्चे होंगे वो सारे लिखेंगे. एवरीवन विल बी राइटिंग. ओके. ठीक है, बाय दैट टाइम अमन सर कम्स. मेरा तो थर्ड क्लास है आज. इन क्वेश्चंस को ट्राई करो तुम. ठीक है, स्लाइड वाले क्वेश्चंस को. ये वाला क्वेश्चन देखो. दिस इज अ मल्टी करेक्ट टाइप क्वेश्चन. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय वर्नियर कांस्टेंट? वर्नियर कांस्टेंट भी कभी कभी यूज कर लेता है क्वेश्चन में. वर्नियर कांस्टेंट का मतलब क्या है? वर्नियर कांस्टेंट इज 1 MSD minus 1 BSD which necessarily need not be equal to लीस्ट काउंट. ठीक है, लीस्ट काउंट डिफरेंट भी हो सकता है वर्नियर कांस्टेंट से. Each 1 centimeter on the main scale is divided into 8 equal divisions and a screw gauge with 100 divisions on its circular scale. In the vernier caliper, 5 divisions of vernier scale coincides with 4 divisions on the main scale. And in the screw gauge, one complete rotation of the circular scale moves it by 2 divisions on the linear scale. Now there is a, like जैसे मैंने लास्ट क्लास में तुमको बताया था कि if nothing is given, one complete rotation में तुम यही ले लो कि linear scale पे 1 division move करेगा वो. But sometimes that might not be correct. Okay, if they have given you the information like this, अगर information ना दिया जाए कि ये कितना distance move कर रहा है, then in that case you can take 1 division size to be equal to the distance moved by circular scale over the linear scale in one complete rotation. ठीक है, लेकिन अगर ऐसे तुमको दिया हुआ है, that means the least count of the linear scale, least count of linear scale and the pitch of the screw gauge is going to be different. Okay. क्वेश्चन नंबर 5 और 9 था ना वो.
0.01 आ रहा है। हेलो यार, वो 5 और 9 में ना एक मिसप्रिंट हो गया था, उसकी वजह से वो बोनस जाएगा। हाँ, उसको रिकरेक्ट करके आप पोस्ट कर दो रिजल्ट को, ठीक है। ठीक है, तो ये आ रहा है दोनों का। Intensity of an interference pattern is observed as I naught sine square theta, where theta is equal to 30 degree. Intensity observed is pi plus minus this value. Percentage error in phase angle will be how much? Phase angle means theta में percentage error तुमसे पूछ रहा है यहाँ पे। अरे उसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशियल लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी 2 sin थीटा cos थीटा into d थीटा, राइट? निकालो वहां से। So other than those two questions, बाकी के questions तो तुमको ठीक ही लग रहे थे ना? There were no mistakes anywhere, right? Still the score is less. स्कोर फिर कम कैसे हुआ क्या? फिजिक्स में भी कम है, मैथ्स में भी कम है। इन मैथ्स ऑल्सो द मार्क्स इज लेस। फिजिक्स में तो चलो 10 नंबर बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा 73 होगा। योर्स विल बी आई थिंक 64 देन। तो कहाँ पे लूज किया मार्क्स? गो थ्रू द पेपर वंस अगेन, ठीक है, एक बार दोबारा से देखना पेपर को। आंसर की वैसे मैंने भेज दिया है। तो परसेंटेज एरर इन द फेज एंगल इज हाउ मच? कितना आया? विच ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग? If I take the differential both sides, what do I get? Di is equal to I naught sine 2 theta, right? Sine 2 theta into d theta. This is what we are getting. और क्या चाहिए मेरे को? इंटेंसिटी में मेरे को परसेंटेज एरर चाहिए। तो अगर मैं आई से इसको डिवाइड कर दूं, विल बी गेटिंग दिस वैल्यू एज आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट? तो ये आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाता है वैल्यू इससे? 2 cos theta 2 cot theta, right? 2 cot theta into d theta, correct? This is relative error in intensity. इंटेंसिटी में रिलेटिव एरर ऐसा कुछ आएगा। थीटा का वैल्यू तुमको 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, मेरे को डी थीटा बाई थीटा चाहिए, है ना? तो इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स विथ थीटा, व्हाट डू आई गेट हियर? या फिर इसको इधर ले लेते हैं, डी थीटा अपॉन थीटा is going to be di upon I times
2i times cot theta, right, multiplied by theta, correct, and this value you can calculate now क्योंकि इंटेंसिटी तो दे रखा है. क्या आ जाएगा ये वैल्यू? डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.002, मतलब 2 इंटू 10⁻³ आया. नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स 5 multiplied by cot theta. What is cot theta here? Cot 30 is √3, right? √3 into pi by 3. Pi by 3 नहीं, pi by 6. So now whatever answer you are getting from here, कितना आ जाता है ये? 4√3 upon pi. परसेंटेज एरर में इतना वैल्यू, ठीक है. और एल्स लॉग लेके भी कर सकते थे. अगर लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बचेगा अपने पास सिंपली 2 log ऑफ साइन थीटा, मतलब आएगा तो वही चीज. यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग ओनली. आइदर यू टेक डायरेक्ट डिफरेंशियल और यू टेक लॉग. Two vernier calipers A and B both have MSDs of 1 millimeter. 10 vernier scale division have same length as that of 7 main scale division of vernier scale A. Vernier caliper A. 8 vernier scale division have same length as that of 3 main scale division of vernier caliper B. So now they are asking you about these all things. मतलब for the first scale, what kind of a situation they have given? They have given कि ये जैसे मेन स्केल हो गया अपना और ये है वर्नियर स्केल. With zeros coinciding, क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ठीक है. तो 7 VSDs आर इक्वल टू 10 MSDs. फर्स्ट केस में ये दिया हुआ है. एंड सेकेंड केस में दिया हुआ है कि 3 MSD इज इक्वल टू 8 VSDs. ओके, तुमको यहाँ पे बताना है कंपैरिजन करके कि लीस्ट काउंट किसका ज्यादा बड़ा होगा. Which one is having higher least count than the other one? फर्स्ट के लिए तो फॉर्मूला विल बी सेम ओनली, 1 MSD minus 1 VSD वाला. सेकेंड के लिए थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, है ना.
आ रहा है ये वैल्यू? इज ट्रू। लीस्ट काउंट कैलकुलेशन करना है ना, बस करो। फर्स्ट का कितना है? 0.3 मिलीमीटर। ओके, एंड सेकेंड वाले का कितना आ रहा है? 0.125। 0.125 कैसे आया? 0.375। हाँ, 3/8। कौन सा फॉर्मूला यूज करो लीस्ट काउंट के लिए? तीन मेन स्केल में 8 वर्नियर स्केल है ना? जैसे ये मेरा मेन स्केल हुआ 0, 1, 2, 3, एंड ओवर हियर यू हैव दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। जीरोस कोइंसाइड करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and eighth division is completely matching here. This is the situation. तो अभी मेरे को निकालना है यहाँ पे कि लीस्ट काउंट क्या होगा इसका। तो नाउ व्हाट मिनिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट यू शुड गिव टू द वर्नियर स्केल, जिससे कि कोई एक मेन स्केल कोइंसाइड कर जाए, है ना? उससे हमारा काम हो सकता है। जो मिनिमम पॉसिबल गैप होगा उसको तुम देखोगे, ठीक है? तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल गैप दैट यू फील हियर टू बी? इज दैट 1 MSD minus 2 VSD? सेकेंड VSD के पहले कौन सा लाई कर रहा है यहाँ पे? सिक्स्थ वाला लाई कर रहा है क्या? सिक्स्थ वाला तो नहीं लाई करेगा आई थिंक। मतलब यू हैव टू थिंक इन दिस मैनर कि मिनिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट क्या दे जिससे कि एक मेन स्केल किसी वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड कर जाए, क्योंकि दैट मिनिमम मेजरमेंट यू कैन एक्चुअली मेजर। दैट गैप इज समथिंग विच विल बी द लीस्ट काउंट। ओके, तो क्या मिनिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट तुम इसको दो जिससे कि तुम्हारा मैचिंग हो जाए इसका। यूजुअली तो ऐसा होता है कि विद इन 1 MSD हम लोग देख लेते हैं हाउ मेनी VSDs आर देयर, बेस्ड ऑन दैट वी टेक द कॉल ऑन लीस्ट काउंट, ठीक है? बट क्या उससे कम में भी काम हो सकता है? दैट ऑल्सो यू हैव टू थिंक। थोड़ा सा वॉचफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे। 1 MSD minus 2 VSD is equal to how much? 0.025 you are getting, no? क्योंकि ये आ जाएगा तुम्हारा 1 minus 2 multiplied by 3/8, नहीं 3/8, 3/8 is 1 VSD ना? कितना आ जाएगा ये? 1 minus 3/4, करेक्ट? ये आएगा। तो दिस इज कमिंग आउट एज 0.25 मिलीमीटर। हाँ, तो वही, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी लार्जर देन द अदर डेटा। मतलब कि अब तुमको ये देखना पड़ेगा कि मिनिमम पॉसिबल क्या डिस्प्लेसमेंट तुम दो। इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑलवेज यू विल गो फॉर दैट फॉर्मूला, ठीक है? तुमको ये देखना है कि कंपेयर करके देख लो, जैसे फर्स्ट डिवीजन एंड सेकंड डिवीजन के बीच में जो गैप है, क्या वो बड़ा गैप है एज कंपेयर टू एनी अदर पॉसिबल डिविजन इन दिस केस? तो वो भी तुमको चेक करना पड़ेगा एक बार। तो सेकंड डिवीजन के जस्ट पहले कौन सा है अपने पास? व्हाट इज दैट? फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन? फिफ्थ वन ओनली ना? क्या क्या? सिक्स तो नहीं होना चाहिए, फिफ्थ होना चाहिए ना आई थिंक। शुड इट बी फिफ्थ और सिक्स्थ? चलो देख लेते हैं ना। 2 minus 5 multiplied by 3/8 कितना आता है ये वैल्यू? फिफ्थ ओनली नो? कितना आ जाता है ये वैल्यू यहाँ से? 15/8। तो 16 मतलब ये आ गया 0.125। ओके, सो यू विल बी गोइंग फॉर दिस डेटा नाउ।
फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीस्ट काउंट। अच्छा, इसमें भी हम लोगों ने कुछ मिस तो नहीं किया है, एक बार देख लो उसको। 1 MSD माइनस 1 VSD ही होना चाहिए या फिर कुछ और होना चाहिए? क्या 1 MSD माइनस 1 VSD इज गोइंग टू गिव यू द मिनिमम पॉसिबल स्लाइडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल, या फिर कुछ और भी हो सकता है? समझ में आया ना यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा? तो इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना। जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें दे कैन इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो 0.125 तो करेक्ट है इसका। ऑप्शन 3 इज राइट इन दिस केस। ओके,
5 times 10 to the power of -4. This is the value of this quantity. कितना आया? चलो देखते हैं. DC by C will be, DC is 10%, तो मतलब ये 1/10 आ जाएगा, राइट? 1/10. And this one is 5% plus 1/20. ठीक है? And this is given as 100n. इसको 100n के इक्वल बोला है, राइट? Okay, find the value of 100n. Fine. So this is given as n. So we have to basically find out the percentage error is what they're asking us. Okay. कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू? तो ये 0.1 हो गया, तो मतलब 10/10 1 and 10/20 0.5, right? 5 getting cancelled out, 0.1. तो 10/10 10/20 करेक्ट. ये 1.5 आ जा रहा है ये वैल्यू, राइट है? ओके, नेक्स्ट वाला देखो. Percentage error in measurement of moment of inertia of an annular disk. If the measured value of inner radius is 3.0 and outer radius is 4.0 and mass is given. How do you write down the moment of inertia of an annular disk? I think moment of inertia, moment of inertia तो तुम दोनों ने पढ़ रखा है. So what was the value? Tell me. You'll take the difference, no? एक बड़ा डिस्क और एक छोटा डिस्क लेके. एन्युलर डिस्क इज समथिंग लाइक दिस. ओके, मतलब ये जो डिस्क है वो यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास. तो इन जनरल इफ इट इज नॉट गिवन विल कंसिडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं. तो ये बड़े वाले डिस्क में से अगर छोटे वाले डिस्क का मैंने माइनस कर दिया, विल गेट द वैल्यू ऑफ एन्युलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या आ जाएगा ये वैल्यू? मास ऑल्सो विल बी चेंजिंग, सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल हियर. सिग्मा तुम सेम मान लो दोनों का, मतलब सिग्मा तो ऑब्वियसली सेम ही मानोगे. इफ यू कंसीडर सिग्मा एज सेम, व्हाट वैल्यू ऑफ मासेस यू आर गेटिंग? m1 r1 होल स्क्वायर बाय 2 माइनस m2 r2 होल स्क्वायर बाय 2 लेना पड़ेगा. तो m1 इज गोइंग टू बी सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर, m2 is going to be sigma into pi r2 square. So see what you are getting finally, value of moment of inertia. Outer I am taking as r1, inner I am taking as r2. Okay, so pi r1 square, this is mass into r1 square whole divided by 2 minus sigma times pi r2 square into r2 square by 2. This is what we are getting. So mass is also given in this, right? We'll have to express it in the form of mass of the annular disk. That is also something that you have to think about. ऐसा नहीं कि सिग्मा के फॉर्म में छोड़ दिया उसको. Mass of the annular disk, that is given. Okay, so try to express that in form of that mass. Then only you can take the error, no? तभी तो error ले पाओगे इसका. तो कितना आ जाता है मास के फॉर्म में, बताओ वैल्यू इसका?
ऐसे एन्युलर डिस्क का हो जाता है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज समथिंग विच यू कैन रिमेंबर ऑल्सो, m into r1 square plus r2 square divided by 2. तो you have to get that expression also. Okay, m into r1 square plus r2 square divided by 2 आ जाता है. थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको, आ जाएगा वो वैल्यू. दिस इज द वैल्यू ऑफ आई. नाउ यू कैन डू इट. ओके, इसके बाद तो तुमको डिफरेंशियल लेना है दोनों तरफ. अब इसमें क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर. कुछ आया आंसर तो बताओ. 7.6. चेक करो अंशु. 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा ये, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 2 इंटू dm प्लस m मल्टीप्लाइड बाई 2r1 dr1, मतलब r1 dr1 प्लस r2 dr2. करेक्ट, ऐसा ही वैल्यू आ रहा है ना कुछ. तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, 2 था ना एक, m by 2 will be taken outside, तो 2 will get cancelled out. This is the expression we are getting. अब इसके बाद तुमको वैल्यूज दे रखा है, तो यू कैन सब्सटीट्यूट इट एंड गेट द आंसर फ्रॉम हियर. पूछा किसमें है ये, परसेंटेज एरर इन मोमेंट ऑफ एरर. हाँ, डी आर इज ऑल्सो अ क्वांटिटी, नो, r1 स्क्वायर जैसा ही यूनिट हो गया उसका, है ना. तो डोंट थिंक कि okay, no, anyway everything is given in terms of CGS form only. हाँ, CGS only. Clear? Okay, fine. दिखाओ जरा सा मॉड्यूल, एक दो और एडवांस पीवाईक्यू में देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन होगा तो विल ट्राई टू कंप्लीट दैट. ऐसे आई थिंक एडवांस पीवाईक्यू बुक है तुम्हारे पास कुछ, हार्ड कॉपी ले लेना यहाँ से, ठीक है. I'll ask them to give it to you, सारे सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का. तो गो फॉर क्वेश्चन नंबर 46, पेज नंबर 62. हैव यू डन दिस, बताओ. क्वेश्चन नंबर 46, ये होमवर्क दिया था क्या मैंने. क्वेश्चन नंबर 46, पेज नंबर 62. 4 quantities are given here.
Show me the module once again. Aman sir will not be coming today. Okay. उनका शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया, उधर जाना पड़ेगा दूसरा सेंटर. आई विल बी टेकिंग योर क्लास, कंटिन्यूइंग योर क्लास. काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दें इसके बाद. ठीक है. तो तुम क्वेश्चन नंबर 45, 46, देन क्वेश्चन नंबर 45, 46 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 93 एंड 51. ये 4 क्वेश्चंस तुम अभी ट्राई करो. ठीक है. ऐसे ही 10 मिनट्स का टाइम है तुम्हारे पास. 11:45 विल बी ब्रेक. 12 से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को. इन 4 क्वेश्चंस को करो. अगर डाउट होगा डिस्कस कर लेंगे उसको. ठीक है.
में ऐसा दिखा वेर यू डिसएग्री? फर्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं. It's not integer, numeric. Okay, but numeric बोला हुआ था इसका तो. But you had got an OMR sheet, no? तो did you write 1.5 or 2 or 1? क्या लिखा? अरे यार, जेई मेंस में भी न्यूमेरिक आता है क्वेश्चंस. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके. 1.5 आंसर था उसका. ओके. ओके. और बताओ एनी अदर. 24 दिखाओ जरा सा एक बार क्वेश्चन नंबर. Question number 24th, xy by x plus y, quantities related to length. X and y are measured using the same scale of least count this much. The minimum possible error is of z. 1 second. Over there in CBTs, what happened is कि वो देते हैं space देते हैं तो वो key in करने के लिए value 1.5 you can actually write it there. Boxes देते हैं. हाँ, OMRs में नहीं रहता है. करेक्ट. बट यहाँ पे नहीं था इस वाले OMR में. ओके ओके ठीक है. नहीं बट लेकिन मेंस में तो आता है न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस. ठीक है मतलब अगर 1.5 तुमने लिख दिया था क्या OMR में? डिड यू राइट इट? ओके. यू गॉट इट एज 1.5 ओनली. फाइन. और मैथ्स और केमिस्ट्री में भी कुछ था क्या एरर जो तुमको लग रहा है ऐसा कुछ? बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग स्कोर देख के तो थोड़ा मैं भी आई वॉज टेकन अ बैक लुकिंग एट द स्कोर. तो आई ऑल्सो फील कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 24 में you would have done it like this, right? 1 by z is equal to 1 by x plus 1 by y. तो यहाँ पे अगर अब हम डिफरेंशियल लेते हैं तो what do I get here? dz upon z square is equal to dx upon x square plus dy upon y square. And this z can be taken to that side. We'll be getting this relative error as xy by x plus y, मतलब y by x plus y rather. y by x plus y into dx upon x बट x and y तो डिफरेंट होगा ना. ओके दे आर गिवन एज सेम ओनली. ठीक है. इसको तुम सेम ले सकते हो. ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू डायरेक्टली यू कैन टेक. तो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम हियर? तो 2 times x by actually they will get cancelled out, right? X plus y by x plus y anyway will get cancelled out. So we are going to get this as dx upon x plus dy upon y directly. वही आएगा ना. मतलब directly dx upon x should be the answer. If you take dx upon x as the common value, x plus y by x plus y will remain inside. So dx upon x, how much is the value coming out then? 0.02 divided by 2. कितना आ जाता है ये वैल्यू? 1%. तो 1 n is equal to 1 should be the value. They have given it as 1 or 3. Okay. ठीक है. तो फिर ये करेक्शन करवा दूंगा मैं आंसर की में. और बताओ. इसमें तो 1 ही आएगा आंसर. आई थिंक 3 तब आएगा ना जब तुम डायरेक्ट लॉग लोगे तब.
अब जैसे मेंस का क्वेश्चन होता है ना, यूजुअली क्या होता है, ओके, dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस d of x plus y divided by dx plus y. This is what we are getting. Again, while distributing it, we'll be getting this as dx upon x plus dy upon y plus dx upon x plus y ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसको. So this will be 1%, this will be 1%, and this will be collectively 1%. तो उससे 3% आ रहा है. तो आई थिंक उन्होंने ऐसे किया है. बट दे आर दिस इज अ केस ऑफ डिपेंडेंट एरर. तो इसीलिए हमें ये करना पड़ेगा. दिस शुड बी द राइट वे ऑफ गोइंग एट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. Area of an equilateral triangle. Fractional error in the measurement of area of two methods are f1 and f2. So root 3a by 4a square, edge method, altitude method, d square by root 3. So 2da by a is equal to 2dd by d, right? That is what you are getting. That means the one second. Fractional error in the measurement of area of the two triangles are ठीक है. Delta d by d. डी और ए में रिलेशनशिप अलग हो जाएगा ना. आई थिंक 4 हो जाएगा आंसर. फिर आंसर विल बी 4, ऑप्शन 4, रूट 3/2 इंटू f2. और बताओ, और कुछ इसमें है? एनी एम्बिग्यूटी इन द क्वेश्चंस? केमिस्ट्री में है. कौन सा क्वेश्चन नंबर बता दो.
केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस है क्या सर आंसर की? मैथ्स में कितने लग रहे हैं? फोर्टी सिक्स को ओके ठीक है। 62 बोल रहे हो ना? कौन सा क्वेश्चन नंबर बोला उन्होंने? नो नो विच क्वेश्चन सर टोल्ड की बोनस करना है उसको? 46। मैथ्स में कौन कौन सा क्वेश्चन बता दो, मैं बोल देता हूँ अमन सर को चेक कर लेने के लिए। मैथ्स में 62 एंड 62 में ऑप्शन ही नहीं है क्या करेक्ट ऑप्शन? आंसर इज नॉट देयर इन ऑप्शन। एंड 67 का क्या है प्रॉब्लम बताओ? डजंट मेक एनी सेंस। ओके फाइन, राइट डाउन काइनेमेटिक्स। अच्छा कुछ वो चारों क्वेश्चंस हो गए यूनिट एंड डायमेंशन वाले? डन ऑल 4? क्या 2? तुम्हारा क्या है? इक्वेशंस बनाओ इसके। 4 है ना वेरिएबल्स, दिखाओ जरा। MLTA। हाँ तो 4 वेरिएबल्स एंड 4 थिंग्स आर देयर, लाइक यू कैन गेट इट आई थिंक। देखो सॉल्विंग में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। देखो अगर 4 वेरिएबल्स तुम्हारे पास है ऑलरेडी, लाइक यूजिंग DA यू विल बी एबल टू गेट इट। इन केस नहीं है देन यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन चेकिंग। हाँ मतलब यहाँ पे नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ नो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन इन जेई एडवांस ऑलरेडी। जेई एडवांस 2024। दैट्स व्हाट लाइक, लेकिन देयर वर मल्टी करेक्ट ऑप्शंस एंड 2 पॉसिबिलिटीज वर देयर इन दैट। ठीक है हाँ तो वो था उसमें, तो देयर वर 2 पॉसिबिलिटीज व्हिच यू कुड हैव गॉन फॉर। हाँ मतलब थोड़ा सा उस तरह से एडजस्ट करके दिया था वेरिएबल्स को। 2024 का ही क्वेश्चन है, देखोगे तुमको मिल जाएगा। जेई एडवांस 2024। So there were 4 variables, sorry, 4 variables that they were asking, and the equations that you would get is only 3. तो तुमको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा इक्वेशन में और फिर देखना पड़ेगा। ठीक है देखो और बताओ, और बाकी के हो गए? ठीक है राइट ऑन मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन। तो कॉन्सेप्ट्स यू गाइज आर ऑलरेडी फेमिलियर विद मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स राइट? तो थोड़ा जल्दी जल्दी क्विक क्विक करते हैं एक बार, काइंड ऑफ रिवीजन जैसा हो जाएगा एंड वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। ठीक है
मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे ज़्यादा इस पे। तो सबसे पहले तो मोशन पैरामीटर्स आ जाता है इसमें, है ना। व्हाट आर द मोशन पैरामीटर्स? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, है ना। तो ये सारे मोशन पैरामीटर्स, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, अबाउट दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यू कैन राइट डाउन। सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? इज देयर एनी बॉडी which can be considered to be at absolute rest? Depends on the purview of the observer, right? So in order to write down rest and motion definition, पहले लिख लो उसका। if the position of body if the position of a body does not change in time, if the position of a body does not change in time with respect to an observer, तो z square by n cube frequency। तो बोनस करना है या नहीं करना है? ठीक है, बोनस करवा दूं? ठीक है। 46 46 होगा ना? 46 क्वेश्चन ना? ओके। ठीक है, तो क्या लिख रहे थे? लिख लो। इफ द पोजिशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ इन टाइम with respect to an observer, the observer would consider it to be at rest. Observer will consider it to be at rest. The observer will consider it to be at rest. So that means whether a body is in motion or rest, that depends on the purview of the observer. ठीक है, और वही अगर पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो मोशन में बोलेगा, है ना। There is no body that can be considered to be at absolute rest. Even the earth is also revolving around the sun, right? So the closest approximation to an inertial reference frame will be a heliocentric frame. Okay, what do you mean by reference frame? Frame of reference किसको बोलेंगे?
Okay. Well, any coordinate system with a clock attached to it is called as a frame of reference. Right on this point. Why do we need a coordinate system? In order to measure the position of a body. Why do we need a clock? In order to measure time. Position and time if we get velocity. And velocity and time if we get acceleration. Okay. तो सारे motion parameters यहाँ से निकाले जा सकते हैं. Write down a coordinate system to which a clock is attached. A coordinate system to which a clock is attached is called as a reference frame. Is called as a reference frame. Generally, we measure the position or the other motion parameters with respect to the origin of that frame of reference. Okay, उसको हम लोग base location मानते हैं अपना. Unless specified. Generally, the origin of the coordinate system will be considered as base location or the reference location. Okay, with respect to which the positions and other variables are measured. Okay, in particle mechanics, we'll be dealing with particles only, right? Whether we are talking about a pen, we will consider it as a particle. When do we say that the body is a particle? कब बोलेंगे कि बॉडी पार्टिकल जैसा बिहेव करता है? हाँ. No, it's not like that. This pen can also be considered as a particle. Even a bigger size object can also be considered as a particle. No, like mainly be it what? ठीक है, फोर्स अप्लाई किया मैंने बॉडी पे तो क्या होगा? इस पे फोर्स अप्लाई किया तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वॉट एवर इज द एक्सेलरेशन वी कैन कंसिडर इट टू बी अ पार्टिकल स्क्वीज्ड एट द सेंटर ऑफ मास और वो मूव कर रहा है उस एक्सेलरेशन से? नहीं बोल सकते ऐसा. Unless the body is not undergoing translatory motion, you cannot say that the body is under a particle. Okay, तो particle के जैसा consider करने के लिए you have to take the motion of the body to be translatory motion. Unless the body is not translating, you cannot take it as a particle. A spinning ball cannot be a particle, whereas a translating ball can be a particle. Okay, right on this point. A body can be considered to be a particle because we have to deal with particles still center of mass, है ना? रोटेशनल मैकेनिक्स में हम एक्सटेंडेड बॉडीज पे जाते हैं ज्यादातर. सेंटर ऑफ मास तक तुम पार्टिकल जैसे ही स्टडी करोगे सारे बॉडीज को. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ पार्टिकल. ओके, राइट डाउन. A body can be considered to be a particle. A body can be considered to be a particle if it undergoes only translatory motion. If it only undergoes translatory motion. If it only undergoes translatory motion. When do we say that the body is undergoing translatory motion? Translatory motion का क्या मतलब है? Parallel shifting of the body. There should not be any change in orientation of the body. ठीक है, तो लिख लो ये वाला पॉइंट भी. ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब है वो भी लिख लो. पार्टिकल तुम तभी कंसिडर करोगे जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में हो, और ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये होता है कि चेंज इन ओरिएंटेशन शुड नॉट बी देयर. राइट डाउन. If the body is while in motion shifts parallel to itself. If a body while in motion shifts parallel to itself, either rectilinearly or in a curvilinear fashion. Either rectilinearly or in a curvilinear way. We call the motion of the body to be translatory. We call the motion of the body to be translatory. ठीक है? So while the body is in translatory motion, can we say that velocity of all the points of the body should be same? Same होना चाहिए, तभी तो उसका orientation नहीं बदलेगा ना. लिख लो ये वाला point भी. When the body is in translatory motion, velocity of all the points of the body should be same.
इट कैन चेंज एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेकिन चेंज ऐसा होना चाहिए कि सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम हो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, है ना. द वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी शुड बी सेम. And there should not be any change in orientation of any line element in the body. And there should not be any change in orientation of, there should not be any change in orientation of any line element in the body. What do you mean by line element of a body? जैसे ये एक body हो गया. If you have any two material points of the body, okay, उसको जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसी को लाइन एलिमेंट बोलते हैं. तो रिगार्डलेस कोई भी लाइन एलिमेंट तुम लो, उसका ओरिएंटेशन नहीं बदलना चाहिए. ठीक है. What is a line element? You can take a note about that as well. These are material points of the body, okay? Material points. So a line connecting any two material points of the body is called as a line element of the body, okay? Line connecting any two material points of the body is called as line element. Line connecting any two material points of the body is called as line element. तो कोई भी ऐसा लाइन एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए बॉडी में जिसका कि ओरिएंटेशन बदल रहा हो. ठीक है. फाइन. तो वी हैव टू स्टिक टू द सेम डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल थ्रू आउट द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स. ओके. फाइन. तो रेस्ट एंड मोशन हमने देख लिया. नेक्स्ट कम्स योर मोशन पैरामीटर्स. So what are the motion parameters? Tell me. Displacement, distance, velocity, speed, the counterparts, and then acceleration. ठीक है. लिख लो इसके बारे में भी. Distance and displacement. Write on motion parameters. Motion parameters. Motion parameters. First one is distance and displacement. Distance and displacement. और उसको बाइफरकेट कर लो. डिस्टेंस एक तरफ, डिस्प्लेसमेंट एक तरफ. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो यू कैन राइट इट डाउन. क्या क्या है, क्या पॉइंट्स लिखोगे यहाँ पे? डिस्टेंस इज एक्चुअली द पाथ लेंथ टेकन बाय द बॉडी, राइट? राइट डाउन डिस्टेंस के बारे में. द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. Whereas in displacement you can write down line joining the initial to final position. Line joining the initial to final position will be taken as displacement. Will be taken as displacement. फिर next point उसमें लिख लो scalar vector. Scalar vector. Path function, point function. Path function, point function only depends on the initial and final location, isn't it? Displacement. Whereas your distance traveled, उसके लिए तुमको छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करके टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा पाथ का. Right on the next point. The magnitude of displacement is always less than or equal to distance traveled by the body. The magnitude of displacement is always lesser than or equal to distance covered. Is always lesser than or equal to distance covered. ठीक है. Write down a question. एक क्वेश्चन लिखो इस पे. हालांकि इस पे क्वेश्चन तो मैंने कराया हुआ था आई थिंक, फिर भी इसका आंसर मेरे को बता दो. वी हैव अ क्यूबॉइड, ओके.
राइट डाउन, ये जैसे हो गया मान लो 9 मीटर, दिस इज 5 मीटर, this is 7 meter. Okay, write down, determine the minimum path length for an ant to crawl from A to E, for an ant to crawl from A to E. How many ways are there through which he can go from A to E? तुमको पता तो है ही क्या करना है इसमें, है ना? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए वी हैव टू टेक द स्ट्रेट लाइन पाथ. तो कोलैप्स करेंगे वॉल को कोलैप्स करके ज्वाइन करना है. तो हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर इन टोटल? एक तो ऐसे जा सकता है ये, दूसरा कैसे जा सकता है ऐसे भी, ठीक है, एंड तीसरा कैसे जा सकता है ऐसे, ठीक है. सो चेक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, दैट विल बी योर आंसर. कितना आ जाएगा इसका आंसर? देयर विल बी 3 रेक्टेंगल्स दैट यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग, राइट? तीनों में से कौन सा होगा करेक्ट? सिक्सटीन स्क्वायर 5 स्क्वायर, दूसरा आ जा रहा है अपने पास 14 स्क्वायर 7 स्क्वायर, राइट? नो, 14 स्क्वायर 9 स्क्वायर, एंड देन तीसरा क्या आ रहा है वो देख लो, तीनों को कंपेयर कर लो. मॉड्यूल दिखाना ना एक बार. टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसका बता दो. आई थिंक 36 तक मैंने बोल दिया था करने को, है ना? क्वेश्चन नंबर 37 टू 95, क्वेश्चन नंबर 37 टू 95, पेज नंबर 64 टू 66. ओके, एंड चैलेंजर्स के 10 क्वेश्चन, जो चैलेंजर्स का जो 10 क्वेश्चन है वो भी करना, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है आज का. ओके, व्हाट आंसर यू गॉट फ्रॉम हियर? टेल मी. इसको पाथ 1 बोल देते हैं, दिस इज पाथ 2 एंड दिस इज पाथ 3. ओके, सो 1 का लेंथ कितना आ रहा है यहाँ पे? आर वी गेटिंग दिस एज अंडर रूट 16 स्क्वायर 5 स्क्वायर. जो दूसरा वाला पाथ है उसका लेंथ क्या आ रहा है यहाँ पे? पीछे जाएगा वो. So the length of the rectangle is going to be 5 plus 7 and breadth is 9. 5 plus 7, 12 का whole square plus 9 का square. And the third one is, इसको ऐसे सीधा करेंगे. So we'll be getting this as how much? ये कितना length है? 9. This is 7, right?
7 मैंने हाइट बोला है ना, और ब्रेड्थ यहाँ पे बोला है, यहाँ पे 5 का, तो 9 एंड 7 + 5, नहीं, इसको सीधा कर रहे हैं ना, ठीक है। तो व्हेन वी स्ट्रेटन इट वी आर गेटिंग 5 + 7 एंड नहीं, कितना आ गया ये, 9 + 7 6, ये कितना आ रहा है, 9 एंड 7 16, 12,9 आ गया, हाउ मच, 14,7, ओके। 14 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, क्या आ रहा है शॉर्टेस्ट इस पे, 12 and 9 of course, right? So this is going to be the right path for this ant to choose. Okay, right on the next question. ठीक है, तो write down a person is walking 5 steps forward, a person is walking 5 steps forward, 3 steps backward, 3 steps backward, a person is walking 5 steps forward, 3 steps backward, size of each step is 1 meter, size of each step is 1 meter. At a distance of 13 meter in front of him, at a distance of 13 meter in front of him, at a distance of 13 meter in front of him, there is a pit. There is a pit. Determine the distance he covers before he falls into the pit. Determine the distance he covers before he falls into the pit. Determine the distance he covers before he falls into the pit. कितना आ गया, 37, ठीक है, ओके। दिस तो यू कैन डू एनीवे, वेक्टर्स का ही है। इसके लिए कैलकुलेशन करके बताओ, थीटा एंगल के लिए, displacement of tip of seconds hand of a clock if it turns by theta angle, length of the second head is denoted by r. Also you have to find out कि इसका speed क्या होगा, average speed क्या होगा। बताओ, whenever a vector rotates by a theta angle, you have seen that no already, एक वेक्टर है विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, अगर थीटा एंगल रोटेट करता है तो क्या होता है, टू आर स्क्वायर या आर, आई थिंक साइन थीटा बाई 2 आ जा रहा था ना वहां पे, याद है ना, एक हमने वहां पे देखा भी था, √2r, आई थिंक इट शुड बी 2r, 2r sin थीटा बाई 2 शुड बी द वैल्यू। याद है ना वो जैसे था ना रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट वेव वाला, तो उसमें मैंने जैसे बताया था, ओके। अरे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ना, ऐसे कौन छोड़ रहा है उसको। डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच इन दिस, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन वी यू विल बी गेटिंग वेरी फ्रीक्वेंट नो, जहां पे कि रोटेशन ऑफ वेक्टर होता है विदाउट एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड, थीटा इज द एंगल ट्रैवर्स्ड एट द सेंटर, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी दिस, सो लुकिंग एट द ट्राइंगल इटसेल्फ यू कैन से कि 2r sin थीटा बाई 2 हो जाना चाहिए इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस विल बी इक्वल टू 2r sin theta upon 2, so 2 times magnitude of the vector into sine of angle, half angle traversed by it, okay। What was the, if it was traveling with a constant speed,
what will the average speed in that case? Average velocity and average speed क्या होगा? Let's say constant speed मैं तुमको दे देता हूँ कुछ r by pi, ठीक है? लिखो, determine the average speed and average velocity of the tip of second hand, average speed and average velocity of the tip of second hand if the speed of नहीं, anyway I don't need to give you the speed, right? You already know, seconds hand है ना यहाँ पे, तो पार्टिकल का मोशन तो है नहीं है, तो निकाल लो इसका आंसर. Average speed and average velocity of the tip of second hand. कितना आ रहा है ये? एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट लोगे और एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ सेकंड हैंड यू विल बी टेकिंग. सो एवरेज के लिए हम लोग एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलरेडी नोन टू अस, दिस इज द वैल्यू. So 2r sin of d theta upon, sorry, theta upon 2 whole divided by what is the time taken in this case? थीटा एंगल ट्रैवर्स करने में कितना टाइम लगेगा? आर थीटा बाई तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट करके लिख दो. ओके, मतलब 360 डिग्री यू आर सेइंग समथिंग, नो? ओके, 60 multiplied by theta upon 2 pi you will be writing. So this comes out as जो भी वैल्यू आ जाए यहाँ से, ठीक है? And average speed is going to be how much? This will be transforming into r theta, right? ये r theta हो जाएगा divide by 60 into theta upon 2 pi, which is going to be 2 pi r upon 60. ठीक है? So average speed for any duration or any angle traversed by the second hand is going to be this only, 2 pi r upon 60, right? देखो ये वाला, I think this is fine only. Determine the displacement of the bottommost point during half rotation while rolling forward. Displacement of the bottommost point during rolling in half rotation. डिस्टेंस कवर्ड का तो हमने कैलकुलेशन किया था, राइट? जो पाथ लेंथ देखा था हम लोगों ने, साइक्लोइडल पाथ. क्या आ जाएगा ये? अंडर रूट 2r होल स्क्वायर प्लस पाई आर होल स्क्वायर, राइट? ठीक है. ठीक है, ये भी तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड हो गया ये, ठीक है? एवरेज स्पीड, राइट ऑन. मोशन पैरामीटर जल्दी से देख लेते हैं इसका, विल मूव इनटू द क्वेश्चंस. Average speed is defined as what? Tell me. The total distance covered by the body upon the total time taken to cover that distance. Write down the total distance covered upon the total time taken to cover that distance. Average speed when delta t tends to 0 turns into the instantaneous value of the speed, right? Just as the speedometer of the car gives you the instantaneous value of the speed. क्वेश्चन ही देखेंगे इसमें तो tell me the answer for this average speed.
60. वन 160/3 डायरेक्ट एवरेज थोड़ी नहीं लेना है इसका. क्या हो जाएगा ये? डिस्टेंस कवर्ड इन दिस केस इज गोइंग टू बी 2d and the time taken is d upon 40 plus d upon 60, right? This is going to be the average speed. 80, हाँ करेक्ट. कितना आ रहा है ये वैल्यू? 160/3 करेक्ट है ना कैलकुलेशन? तो 160/3 किलोमीटर पर आवर. इज दिस करेक्ट? If the time of the motion is given, speed is given, and they ask you about the average speed, what will you do in that case? V1 T1 weighted average उसका ले लेना है ना? V1 T1 plus V2 T2 divided by T1 plus T2. If they are giving you the distance and the speed, they ask you about the average speed. In that case, you have to go ahead with this time calculation करना पड़ेगा. Ultimately, basic definition तो वही है, total distance divided by total time taken. So somehow you arrive at the time taken and the speed. Okay. Write on another question on this. A car is moving with a speed of 20 kilometer per hour for half of the journey. 20 kilometer per hour for half of the journey. For the remaining half, half of the time it traveled with a speed of 30 kilometer per hour. Half of the time it traveled with a speed of 30 kilometer per hour, and remaining half of the time with 40 kilometer per hour, and remaining half of the time with 40 kilometer per hour. Determine the average speed of the body. Determine the average speed of the body. Half of the distance it was traveling with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर. रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है उसमें हाफ ऑफ द टाइम ये करता है कितना? 30 से, एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम 40 से. ये क्वेश्चन में दे रखा है. You are required to find out the average speed of the body.
कितना आया? टू 80/11। ठीक है, क्या किया? d बाई हाउ मच? d बाई 2 इंटू 20 प्लस d बाई 2 इंटू 35 कर दिया क्या? कितना आ जाता है यहाँ से वैल्यू? 70 and this is 40, so 280 will come up and ये 100 and नहीं 280 नहीं 2800 आ जाएगा ना नीचे, and this will be 110, so 280/11 kilometer per hour. Okay, so whether you travel with a speed of 30 kilometer per hour for half of the time and 40 kilometer per half for half of the time, और you say that average speed इस duration का 35 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 35 से अगर सेम टाइम में हम लोग डिस्टेंस कवर करें तो d/2 ही कवर करेंगे, ठीक है। सो द वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस। ओके, एवरेज वेलोसिटी, अगेन एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और क्या क्या लिखोगे इसके बारे में लिख लो, राइट डाउन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, it is a vector quantity how can we calculate average velocity? Total displacement upon total time, delta s divided by delta t vectorially, ठीक है। this we can also write it as ठीक है। If suppose they ask you velocity as a function of time, then they are asking you about the average velocity in a duration. So for that what will you do? You will calculate the total displacement first. और ये हमने देखा होता ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, इंटीग्रल ऑफ v dt divided by total time taken t, which is also equal to what? Area under vt curve upon time taken, ठीक है। एरिया के टर्म्स में इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया अंडर vt कर्व अपॉन टाइम टेकन। Write down the instantaneous values. Instantaneous velocity in turn is the velocity of the body at a given instant of time. Is the velocity of the body at a given instant of time, which can be calculated by taking the limit of time tending to 0. Which can be calculated by taking the limit of time tending to 0. ठीक है। So instantaneous velocity that way will be transforming into this kind of a function, right? ds upon dt. Delta s will turn into a very small displacement ds and time will be tending to dt. Okay, this is the instantaneous velocity, which we can write it as slope of vt curve, sorry, st curve, displacement time curve. This though we have already seen this kind of a question. ठीक है, ये भी कर लोगे, वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा हमने किया, ठीक है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद v नॉट, रिमेनिंग हाफ distance was covered with v1 for half of the time, v2 for another half of the time. Okay,
दिस ऑल्सो यू कैन डू, कर लोगे इसको भी? ठीक है, लिखो एक्सेलरेशन के बारे में वैसे ही। The rate of, it gives the rate of change in velocity of the body. Acceleration is the rate of change in velocity of the body. Acceleration is rate of change in velocity of the body. ठीक है, अगेन इसको एवरेज और इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम वी विल सी द चेंज, और टाइम से उसको डिवाइड करके हम लोग निकाल लेंगे। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन simply delta t tends to 0, which will transform this into dv upon dt. अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ए डी टी अपॉन टोटल टाइम टेकन। यूजुअली तुमको ग्राफ दिया जाएगा तो वेरिएशन तुमको समझ में आ जाता है उससे, ए डी टी अपॉन टोटल टाइम टेकन 0 से लेके t तक। दिस इज अगेन एरिया अंडर ए टी ग्राफ अपॉन टाइम टेकन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। What do you mean by this quantity? D of mod V upon dt. What is the meaning of this quantity? dV by dt mod. This is the rate at which the speed of the body is changing. Okay. Speed किस rate से change कर रहा है? When I talk about this, so it is talking about the magnitude of rate of change in speed, right? Rate of change in velocity. Okay, which means magnitude of acceleration के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है? मतलब it covers both the entities direction as well as magnitude, but here we are talking about change in rate of change in the magnitude of the given quantity. Okay, तो ये हो गया तुम्हारा rate of change in speed. This is magnitude of acceleration. देखो ये क्वेश्चन को, average speed of a particle in a given time is never less than the magnitude of average velocity. Is that correct? Average speed of a particle in a given time is never less than magnitude of average velocity. This is a correct statement. ठीक है, सेकेंड वाला देखो, क्लियर है ना? ये वाला तो, फर्स्ट वाला तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. It is possible to have a situation wherein d mod of v by dt, sorry, mod of dv by dt is not 0, but d of mod v by dt is 0. Can we have that kind of a situation? Mod of dv by dt क्या हो गया? एक्सेलरेशन. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है लेकिन स्पीड नहीं बदल रहा है. बिल्कुल हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर wherever your velocity is changing without any change in magnitude, you can say that over there this kind of a situation you will arrive at. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो बदल रहा है ना? So this is possible.
तुम एग्जाम्पल में लिख सकते हो सर्कुलर मोशन को. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट वन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0 in a time interval. It is possible that instantaneous velocity is never 0 in that interval. Average velocity of a particle is 0 in a time interval. It is possible that the instantaneous velocity is never 0 in that interval. Correct है ये भी. अरे भाई circular motion ही. When you complete one circle, what happens to the overall average velocity of the particle? There is no displacement, right? Displacement is 0. And was the instantaneous speed anywhere became 0? Uniform circular motion कर रहा है body, ठीक है? तो in that case we can say कि ऐसा possible नहीं है, ठीक है? मतलब possible है ऐसा. So option C is also correct in this. What about option D? देखो, average velocity of a particle moving in a straight line is 0. Straight line, ठीक है? Average velocity of a particle moving in a straight line is 0 in a time interval. It is possible that instantaneous velocity is never 0 in that interval. Infinite accelerations are not allowed, ऐसा बोला हुआ है. Is it possible? This is not possible. Why? क्योंकि अगर मान लो कि ये बोल रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन में है बॉडी और इसका एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट मस्ट हैव केम बैक टू द सेम पॉइंट. ओके, राइट 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 राइट. लेकिन वेयर एज इफ इनफाइनाइट एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल, तो राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसको टर्न तो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा ना. तो व्हेन इट इज टेकिंग अ टर्न, it should suddenly change from v to minus v, which is not possible. ठीक है, t tending to 0 में. हाँ, तो वही डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा वहां पे. प्लस v था, अचानक से माइनस v हुआ. ठीक है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. तो ऑप्शन ए बी सी इज करेक्ट एंड डी इज इनकरेक्ट. देखो ये वाला, velocity of a particle is 0 at t is equal to 0. Acceleration at t is equal to must be 0. No. जैसे एक बॉडी को ड्रॉप किया, तो जब हम ड्रॉप करते हैं तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? 0 होता है, लेकिन एक्सेलरेशन तो होता है उसका g. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट, मे बी 0, वो करेक्ट है, हो सकता है ऐसा, रेस्ट पे बॉडी. नेक्स्ट, if the acceleration is 0 from t is equal to 0 to 10 seconds, the speed is also 0 in this interval. Obviously not, क्योंकि अगर acceleration 0 है, मतलब our body was already in motion with some speed, so it will continue. Okay, initial velocity 0 बोला हुआ है, then in that case it is correct only. ठीक है, speed is also 0 in that interval. What is the last one? Speed is 0 from t is equal to 0 to 10 seconds. The acceleration is also 0 in that interval. Is it correct or incorrect? पूरे इंटरवल में ही बोल रहा है स्पीड 0 है. अगर इफ एट ऑल देयर वाज एन एक्सेलरेशन, तो स्पीड को चेंज करना चाहिए था, है कि नहीं? स्पीड का बात कर रहा है ये. सो इफ एट ऑल देयर वाज एन एक्सेलरेशन, इन दैट केस इट शुड हैव चेंज द स्पीड. ओके, लेकिन ये 0 थ्रू आउट द मोशन बोल रहा है, सो दैट्स द रीजन व्हाई. मतलब ये भी करेक्ट हो गया ना तब तो. दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन देन. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो. Particle starts rectilinearly from t is equal to 0 such that the velocity changes with time according to this equation, t square minus t, where t in seconds and v is in meter per second. The time interval in which the particle retards. What do you mean by acceleration and retardation? When do you say that the body is retarding? Correct, right on this point. If the velocity of the body is opposite to the direction of acceleration, if the velocity of the body is opposite to the direction of acceleration, or has a component of acceleration opposite to velocity, or has a component of acceleration opposite to direction of velocity, or has a component of acceleration opposite to direction of velocity, we say that the body is undergoing retardation. We say that the body is undergoing retardation. What's the meaning of that? मतलब acceleration और velocity opposite direction. 1D motion के context में ये बोल सकते हैं कि they have to be in opposite direction. But 2D motion के context में क्या बोलेंगे हम लोग
इवन अगर एक कंपोनेंट भी हो जाए एक्सेलरेशन का जो कि वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो बॉडी रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। तो इफ दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैन आई से एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो लेस देन जीरो होगा, शुड बी लेस देन जीरो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो यहां पे बता दो आंसर क्या होगा। मतलब मेनली दे हैव टू बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो नंबर लाइन पे तुम प्लॉट करके देख लो प्लस माइनस कहाँ हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन कंक्लूड। तो कौन सा इंटरवल हो जाएगा, विच इंटरवल। रूट्स क्या आ रहा है इसका, जैसे वेलोसिटी का रूट्स आ जाएगा तुम्हारा t इंटू टी माइनस वन, करेक्ट, इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो एंड वन, तो जीरो एंड वन सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, ठीक है। और जहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है देर आर चांसेस ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन, राइट, ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी इन दोनों इंस्टेंट्स पे जीरो हुआ, ठीक है। t इक्वल टू जीरो पे तो रेक्टिलिनियरली स्टार्ट ही कर रहा था ये, ठीक है, तो चलेगा। t इक्वल टू वन सेकेंड पे वो टर्न बैक कर रहा है ना। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका, टू टी माइनस वन। तो t इज इक्वल टू हाफ पे इसका एक्सेलरेशन जीरो हुआ, है ना। तो नाउ इफ आई प्लॉट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जैसे वेलोसिटी के लिए लाइन बना रहा हूं मैं, जीरो एंड वन, जीरो से वन के बीच में क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। जीरो से वन के बीच में अगर तुम ले तो नहीं, नेगेटिव होगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, सो नेगेटिव हो जाएगा। एंड उसके पहले तो साइन स्कीम से देख लेंगे उसको, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये वेलोसिटी के लिए हो गया। एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा वैसे ही, t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड पे ये जीरो हुआ था, उसके पहले और उसके बाद। t का वैल्यू हाफ से ज्यादा रखोगे ऑब्वियसली वो बढ़ेगा, है ना। तो वी कैन से दैट द सिचुएशन वाज लाइक दिस, माइनस प्लस। तो नाउ यू चेक द साइन एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड क्या आ जाएगा इसका आंसर। रिटार्डेशन का बात कर रहा है जहां पे ऑपोजिट साइंस का हो ये दोनों। तो जीरो से वन सेकेंड्स के बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो जीरो से लेके हाफ तक नेगेटिव था, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा था। हाफ से लेके वन तक रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट ओनली। टी लेस देन हाफ के लिए एनीवे, लाइक टी लेस देन हाफ के लिए क्या आ जाएगा, लाइक आई मीन देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज, सो वी कैन नॉट कंक्लूसिवली से कि रिटार्डेशन हो रहा है या एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। हाँ, बस रिटार्डेशन की बात कर रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी, दिस क्वेश्चन आई थिंक वी हैड डन, नो, लैम्प पोस्ट वाला कोई पेपर में तो था शायद, डीबीपी में। हम्म, क्या आंसर आता है बता दो जल्दी से। टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन इज आस्किंग। तो पर्सन का तो स्पीड दे रखा है ना, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। शैडो का स्पीड निकाल लो और माइनस कर लो दोनों को, कितना आ जाता है, कितने डिस्टेंस पे चला गया ये। ठीक है, if the speed of the person is 60 centimeter per second, यहाँ पे लैंप है and the person has moved to this position, shadow has moved to, tip of shadow has moved to this position, ठीक है। इसको x ले लेंगे और ये कुछ सिमिलैरिटी यूज करके निकालोगे इसको, कितना आंसर आता है देखो।
बेस ऑफ द ट्राइंगल इज x, दिस इज 2.4, ठीक है, दिस इज थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा, रिलेट कर लेंगे ना उससे डिस्टेंसेस को, x एंड x प्लस वाई, इसको अगर तुम y बोलते हो तो इन टर्म्स ऑफ x एक्चुअली यू कैन फाइंड इट आउट, फिर वहां से आ जाएगा रिलेशन, कितना आ जाता है, हाँ यू डोंट नो x, दिस, ओके दे हैव नॉट मेंशन्ड इट, क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर हम लोग बताओ, दीज टू ट्राइंगल्स आर एनी वे, दिस वन एंड दिस वन इफ आई टेक 2.4 by x is equal to 1.6 by y, करेक्ट, तो ये आ जाता है y का वैल्यू यहां से 2/3x, राइट, तो 40 is the answer, because y is that additional distance which the shadow has covered, तो वो उससे डायरेक्ट आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, when do you say that the body is in uniform motion? If the velocity of the body is constant, write down, if the velocity of the body is constant, if the velocity of the body is constant, we say that the body is in uniform motion, we say that the body is in uniform motion, ठीक है, can we say that uniform circular motion is a uniform motion? Of course वहां पे velocity का direction change हो रहा है, even though the speed is remaining constant. अब NCERT में definition ऐसे लिखता है कि if the distance covered in the equal interval of time is equal, जो हमेशा से लिखा है ना, I think 9th 10th में भी तुमने पढ़ा होगा उसके बारे में तो NCERT बुक में, so they have given in this way, distance covered in equal time interval is equal, we say that the body is in uniform motion. However सर्कुलर मोशन में वो फिर इनफैक्ट डायरेक्शन कहीं भी चेंज हो तो गड़बड़ हो जाएगा वहां पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में मान लो कि इक्वल टाइम में अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम डिस्टेंस तो कवर कर रहा है बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग, सो यू कैन नॉट से इन दैट केस द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए द ओनली कंडीशन इज वेलोसिटी वेक्टर हैज टू बी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा बॉडी, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस तुम खुद से करके आओ एंड वी विल मोस्टली डिस्कस, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसका कॉन्सेप्ट को खत्म कर लेंगे एंड विल डिस्कस क्वेश्चन आफ्टर दैट, ठीक है, दिखाओ जरा सा होमवर्क, यू हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू नो, यूनिट एंड डायमेंशन का जो बचा हुआ क्वेश्चन है मॉड्यूल का, तो 36 के बाद बचा हुआ था आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 37 से लेके क्वेश्चन नंबर 95 तक देखोगे, I think most of the questions you will very quickly solve, ठीक है, क्योंकि इजी questions है बहुत सारे, डायरेक्ट questions, चैलेंजर्स का 1 से लेके 10 तक, चैलेंजर्स का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है, ये करके आओ, अभी मैं तब होमवर्क नहीं दे रहा हूँ काइनेमेटिक्स का, तुम ये काम कर सकते हो, यू कैन, डू यू हैव योर नोट्स काइनेमेटिक्स का पुराना, काइनेमेटिक्स इज डन नो प्रीवियसली इन योर क्लास ऑल्सो, तो तुम एक काम करना कि एक बार रिवाइज करके आना, नहीं तो मॉड्यूल रिवाइज करके आना, छोड़ दो नोट्स वोट्स रिवाइज नहीं करना है, इसमें मॉड्यूल में जो भी कॉन्सेप्ट है 1D मोशन का, यू जस्ट गो थ्रू देम वंस, ओके, एंड HCV भी एक बार देखना, रेस्ट एंड मोशन करके होगा चैप्टर, ठीक है, तो रीडिंग असाइनमेंट जैसा समझ लो इसको तुम, रीडिंग असाइनमेंट एंड दिस, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे कि यू विल प्रायोरिटाइज द चैलेंजेस प्रॉब्लम, ठीक है, इन यूनिट एंड डायमेंशन, बाकी प्रॉब्लम्स तुमसे हो ही जाएंगे ऐसे भी, तो चैलेंजेस वाले प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करना है एंड देन उधर तुमको रीडिंग असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, ठीक है, जिससे हम जल्दी जल्दी खत्म करें, एक बार मॉड्यूल को ही मैं गो थ्रू करवा दूंगा, जिससे हार्डली विद इन 1 क्लास विल फिनिश ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है।